Yeah, as a veteran and a citizen of my country, I'm pretty proud to now know firsthand from our Air Chief of the Air Chief Marshal AP Singh that Indian armed forces have achieved significant success during Operation Sindoor. For a long time, there were a lot of political questions, and also from a particular strategic community from our country were questioning the end state or what we have achieved during Operation Sindoor. I think coming out in the open after 3 months by the Air Chief Marshal himself is a major significant step. Why I think also a lot of doubt must be being created at why they have taken 3 months to give such an answer and coming out in the open. But as a civilization tradition and as a responsible leadership of Indian Armed Forces, it was very important for the Air Chief to have validated all the information which is available using technology, technical intelligence, satellite intelligence, and variety of other intelligence sources to confirm that the success which were achieved on the ground by Indian Armed Forces were assured to be declared in the public domain. So the Air Chief has briefed in detail, say it's like 80 to 90 hours in work. It's a high-tech war. Pakistan were on their toes, demanding talk with DGMO regarding the ceasefire. How would you look at the overall statement? Plus, the Air Chief also mentioned that we have shot down 5 fighter jets of Pakistani Air Force along with one big aircraft. How would you see this? Yeah, look, I'll first answer the second question. 5 fighter jets and 1 AWACS has been totally confirmed by the Air Chief. Besides, large number of other assets have been shot down or destroyed by our Indian Armed Forces in about 88 hours of small, I'll say, an operation with Pakistan. There are a couple of things more to add to it. Is that it reflects a great advancement, or it validates our Atmanirbhar Bharat, this thing in which the air defense system of Pakistan, which was primarily based on the Chinese system, was actually breached, allowing Indian Air Force to carry out operations without any hindrance. It's a major achievement, because nowhere in the world today any Air Force or any Indian Armed Forces, any armed forces have been able to achieve domination of airspace, which our forces have shown in this operation. AP Singh also talks about the AEW and C aircraft which was taken on at a distance of about 300 kilometers, which is you see a significant achievement for us. Yeah, 300 kilometers is in the recorded history, I think, is one of the worst and the rare kind. And coming from the Air Chief himself, I think we must feel very, very proud of it. While celebrations for Operation Sindoor success was ongoing, but today's declaration of success in terms of quantity and number coming from the Air Chief himself is a matter of celebration. But I hope the declaration by the Air Chief himself will at least quieten the dissenting voice or the political opposition which was asking many questions from the armed forces and the political establishments. He also added that this is the actually largest surface to air kill that we can talk about. Shahbaz Jaffarbad airfield, one of the major airfields. We have destroyed the F-16 fighter jets of Pakistan, which are on hangar and they are on the base, and Indian Air Force. Correct. So it is one of the finest operations which has been led in the recent history by any armed forces, which is recorded. But more importantly, please understand that within 20-25 minutes, 11 airfields were hit. It has not happened ever. Sir, it's a big shock for Pakistan also. India have F-16 fighter, one of the most advanced fighter jets. Yeah, you see, for Pakistan, I think they knew very well that what effect had taken place, but it was not announced publicly. So this declaration has got a psychological impact on the Pakistani military, but more importantly for the public, who now knows that the Pakistan military is not very capable of fighting any kind of a conflict with our armed forces. Last question, sir. The Air Chief also talked about the air defense system, which done a miraculous job in this operation. Also, he talks about the defense production, which is at all-time peak of 1.5 lakh crore in this financial year. Last year, it was 1.27 crore in 2019. It was increased about 18%.
Yeah, so in last about decade plus, there's been a gradual increase upon the Indian defense production. I think the changes of policy of the present government has ensured that our defense production has taken a great jump and a leap, which will continue to grow. I'm quite sure about it, because today's world requires Atmanirbhar Bharat. It also requires Make in India, Make for India concept, and also slowly as our markets abroad are expanding. So this investment will go out towards this money which will come to us will get further flowed into our security establishment. It is a great step which is being taken by RDC. But you're talking about S-400, the success which we have achieved by S-400 to defend our skies is worth complimenting. हिंदी में AP सिंह आज सामने आए और सभी सवाल जो थे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर काफ़ी विस्तार से उसका जवाब दिया था। 80 से 90 घंटों के अंदर पाकिस्तान ना सिर्फ अपने घुटनों पर था, बल्कि उसने DGMO से कॉल कर ये अपील की कि सीज फायर किया जाए और इसे रोका जाए। किस तरह से S-400 की बात की उन्होंने? देखो, सबसे पहली बात है, एज अ वेटरन, एज एन एक्स आर्मी, एज अ सोल्जर, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे एयर चीफ ने आकर के पब्लिकली अनाउंस किया। 3 महीने लगे इस बात को कहने में, क्योंकि एक हमारी परंपरा रही है कि हम अपने सक्सेसेस को भी डिक्लेयर नहीं करते और हम ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं करते, मगर ये कुछ कंपल्शन था। उन्होंने ये भी बोला कि ये सब चीज़ें मुझे अपने लोगों को बताने के लिए कहनी पड़ रही है, क्योंकि कई लोगों के ऊपर ये विश्वास नहीं था कि हमने जो चीज़ अचीवमेंट करी है वो क्या है। मगर 3 महीने भी ये तो जग जाहिर था। लोग सैटेलाइट पिक्चर्स, पाकिस्तान के लोग खुद भी इन सब चीज़ों को मीडिया के अंदर डाल रहे थे, मगर एज एन एयर चीफ जब आप किसी चीज़ को पब्लिक के सामने बताते हो तो वो बिल्कुल वैलिडेट होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। तो कुछ टेक्निकल फोरेंसिक्स, इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों को बिल्कुल जब 100% उन्होंने पुख्ता कर लिया, तब जाकर के अपने देशवासियों के सामने बताया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने ये काम किया। सर, एयर चीफ ने इस बात को भी पुख्ता तौर पर बताया कि 5 पाकिस्तानी जो लड़ाकू विमान है उन्हें ध्वस्त किया गया, साथ ही बड़े एयरक्राफ्ट उड़ाया गया, AW एयरबेस डिस्ट्रॉय किए गए, F-16 जो इस समय सबसे लेटेस्ट जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं पाकिस्तान के, वो हैंगर में खड़े थे एयरबेस पे, उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं दिया गया, एयरबेस पूरे तबाह कर दिए गए। किस तरह से सर इन अचीवमेंट? इसमें 2-3 चीज़ें देखिए। सबसे पहली बात है, जो अभी मुझे लगता है जो अचीवमेंट बताई हैं, जो डिस्कशन बताया, वो पूरा नहीं बताया है। उन्होंने अपने पास कुछ और भी होल्ड करके रखा है, वो शायद बाद में भी बताएं। मगर ये जो 5 फाइटर जेट और इवैक्स को जो उन्होंने बताया है 300 किलोमीटर की दूरी पे मार किया, एक बहुत ही अच्छी, एक तकरीबन आप समझिए एक रिकॉर्ड स्थापित किया गया है इसके अंदर। दूसरा, कई जहाज उनके टेक ऑफ ही नहीं कर पाए। 25 मिनट 30 मिनट तक जो पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वो पूरा डोमिनेटेड रहा, जिसके अंदर 11 एयरफील्ड तहस नहस कर दिए गए। ये भी समझिए कि इनका एक एयरफील्ड ऐसा है जो तकरीबन 1.5 महीने हो गए हैं, अभी तक वो चालू भी नहीं हो पाया। हालत ये है कि बहुत बुरी तरह उनके बेसिस को तहस नहस किया गया। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे आर्म फोर्सेस के लिए, और मैं उसका बहुत फ़ख्र हूँ। सर, आखिर सवाल S-400 की कम जा रही है, साथ ही ये भी बताएगा कि इंडिया कितना आत्मनिर्भर हुआ है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। 1.50 लाख करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट पिछले साल यही 1.27 करोड़ था। 2019-20 के मुकाबले 18% की ग्रोथ है। जिस हिसाब से हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान के एयर स्पेस को भेद करके पूरी कार्रवाई करी, डोमिनेट किया, उनके कई रडार्स एयर डिफेंस के उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए और पूरा सिस्टम ब्रीच कर दिया। वही चीज़ जो पाकिस्तान करना चाहता था हमारे ऊपर, वो नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे पास काफ़ी आत्मनिर्भर इंडियन सिस्टम्स, इंडिजिनस सिस्टम्स थे AD के, और S-400 भी हमारे साथ था। इसकी वजह से हमारी जो AD वॉल है वो भेद नहीं कर पाए। आई थिंक इस बहुत हमें खुशी की बात है और फ़ख्र होना चाहिए। दूसरी बात, आप जो आत्मनिर्भर भारत की और डिफेंस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये करंट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो एक आत्मनिर्भरता के ऊपर एक फोकस दिया है, उसकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाया है। और मुझे यकीन है कि आने वाले समय पे हमारा देश कई मामलों में, कई क्रिटिकल नीश टेक्नोलॉजी के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा, ताकि जो विदेश के लोग हैं, जो कई पावरफुल कंट्रीज़ हैं, हमको कंट्रोल करती हैं इन सब चीज़ों के मामले में, वो कंट्रोल से भी हम बाहर हो जाएं।